Good morning. Hi. Hello everyone. So, today we are going to continue lesson 2, that is chapter 2, all together, subject EVS 5th standard. Okay. So, as you know, in last class we have discussed about the story of Aryan. Right? Story of Aryan and his friend. Aryan came to Ahmedabad and he started living along with his friend. And how they managed to live there, we have discussed. We have also discussed about the things made from the plant, what we get from the plants, and what we should do to maintain the trees. Right? Because we are getting so many things from the trees, so we should preserve trees, grow more trees, and maintain it also. Now today we are going to start with the continue the same lesson, page number 14. Look at here. This is also the picture illustration, right? If you observe, there are 6 pictures. Now here in these pictures, it describes how the fruits, vegetables, grains from the field grown by the farmers reach to our table or in our plate. So how the farmers grow vegetables, then grains, fruits in their field, and then how they sell it, and then we buy it from the market and it comes to our plate. Here it's there in this picture. So I'll explain you all the pictures one by one. Listen carefully and side by side observe the pictures also. And if you come across some other points, just keep in mind. Look at the first picture. In this first picture, the farmer and his wife, they are filling the grains. See, they are filling the grains in a sack, right? Gunny bags. So they are filling it in a sack. After, see, they have worked so hard in their field for growing these grains. So they are now filling it in a sack to sell it out in a market. Then this farmer, he sells the grains, full of grains, to a wholesale market. See, this is a wholesale market where this man is collecting the grains from this gunny bags from the farmer. So this wholesale market, from here the retail merchants, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे दुकान वाले होते हैं, they buy this grain from this godown, from the wholesaler. ये wholesaler है जो बहुत सारी quantity में रखते हैं, बहुत सारा bags of grains they keep there. एंड छोटे छोटे जो मार्केट के रिटेलर शॉप्स वाले जो दुकानदार होते हैं, दे परचेज दिस ग्रेन फ्रॉम हियर, फ्रॉम द गोडाउन्स, फ्रॉम द होलसेलर. सी द थर्ड पिक्चर. दिस लेडी, व्हाट शी इज डूइंग? दिस वुमन इज बाइंग डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर्स. सब्जी वाले से अलग अलग वेजिटेबल्स शी इज बाइंग. सो इनके पास भी ऐसे ही वेजिटेबल्स यहाँ पर आए होलसेल मार्केट से. छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वहां से खरीद लाते हैं. दिस लेडी इज बाइंग फ्रॉम, राइट. नाउ नेक्स्ट पिक्चर, इफ यू ऑब्जर्व व्हाट शी इज डूइंग? यस, शी इज ग्राइंडिंग grains to get the flour, right? But nowadays we have electric grinding mills in our house, right? You all must be also having, few of you must be having this grinding mills, at electronic grinding mill at your house, right? Or we go out for grinding in atta chakki outside nearby your house. So these grains which you buy from the market, then you grind it and to make a flour. Now the flour is ready, atta ready हो गया है. Now the fifth picture, this woman, she is preparing dough. देखो आटा गूंद रही है ना, from the flour. आटे में से वो आटा का पीस ये गूंद के बना दिया and she will make chapati from it, right? You must have seen your mom in kitchen kneading the dough and she is making chapatis, theplas and many more things from the dough, right? And the last picture, see this woman, she is preparing food. So whatever vegetables, fruits, then grains she has bought from the market, pulses from the market, and now she is cooking. So to keep ready in your plate the whole meal.
So farmers have worked hard for us for growing fruits, vegetables and grains. So we are able to eat very nicely at home on dining table, and we enjoy our food because of these farmers, right? So just observe all the pictures carefully. So we can see how the grains and vegetable from the field brought to the house to cook, right? This much is there in this picture. Now we are going to move on page number 15. Right, page number 15. There is one more story. We'll do question answers later. But before starting this story, just look at the board. This is the match the column. Observe carefully. Potter, tailor, cobbler, costermonger and cattle rearer. Right? And here makes footwear, sell milk, stitches cloths, makes pot, sells vegetables. Now, who do what? What work they do? Now, potter. What does potter do? Yes, makes pot. So, write down here D. Next is tailor. What does tailor do? Yes, stitches cloths. So, write down answer C. Cobbler, mochi. पता है ना क्या करता है? Yes. He makes footwear. So write down answer A. Costermonger. Costermonger मतलब vegetable vendor होते हैं, उनको बोलते हैं costermonger. So what does he do? Sells vegetable. And the last is cattle rearer. क्या करता है? Cattles मतलब जो cow, buffalo, goat, तो ये जो रखते हैं और फिर उसमें से वो मिल्क लेते हैं, तो they sell milk. Cattle rearer क्या करते हैं? They sell milk. So write down answer B over here. Just take a screenshot and keep ready. And you have to write this in your notebook. Okay? This already you have done in previous class also. This is just to revise. Because all together, they all work together in the society to keep our work easy. Right, now move on, page number 15. Right, this is the story of a girl. This is the story of a girl named Rupal. Okay, now I'll just read the story and explain you. A young girl Rupal, along with all the other children in village, wants to go to school. Now ये जो गर्ल है रूपल, वो उनकी लोकेलिटी में बहुत सारे बच्चों को रोज स्कूल जाते देखती है. सो शी ऑल्सो वांट्स टू गो टू स्कूल, बट वो नहीं जा सकती. सो व्हाट इज द रीजन? विल डू फर्दर इन स्टोरी. शी आस्क्ड हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल, बट रूपल कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी. तो वो उसके फादर को बोलती है, शी टेल्स हर फादर, आई ऑल्सो वांट टू गो टू स्कूल. सी अदर चिल्ड्रन आर आल्सो गोइंग इन स्कूल, but she cannot go to school for study. We'll move on next page, page number 16. Rupal used to feel that she should go to school, but she could not because she was not like other children. Rupal को तो लगता है she wants to go to school like other children, but she can't go. क्यों नहीं जा सकती? Because she was not like other children. बाकी सब बच्चों के जैसे रूपल नहीं है. जस्ट लुक एट हर. सी व्हाट शी इज हैविंग. शी नीड सपोर्ट. व्हाई शी नीड सपोर्ट? लेट्स डू इन रीड इन स्टोरी. शी वॉज डिफरेंट. शी कुड नॉट इवन प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स. She could not even play like other children from others. So बाकी सब बच्चों के जैसे वो पढ़ाई कर सकती नहीं है, चल भी नहीं सकती, खेल भी नहीं सकती है. She was willing to go to school and was very fond of studying. She was willing to go to school. उसको तो बहुत दिल है कि वो स्कूल जाके पढ़ाई करे, बाकी सब बच्चों के साथ खेले करे. And was very fond of studying. बहुत पढ़ाई पसंद है. But what can be done? क्या कर सकते हैं? She can't go to school. She is very fond of going to school and studying, but she can't do.
तो क्या कर सकती है, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या है। रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर लेग्स सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही उसके दोनों पैरों में पोलियो है। पोलियो में क्या होता है कि तो वो अपने पैरों पे खड़े रह ही नहीं सकते, अगर खड़े नहीं रह सकते तो खेल भी नहीं सकते। सो शी वॉज हैविंग पोलियो फ्रॉम हर चाइल्डहुड। शी कुड नॉट वॉक देंस, तब से वो चल भी नहीं सकती है। बट वंस सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर। हर फादर वॉज नॉट दैट मच इनफ हैविंग मनी, सो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक संस्था थी जिन्होंने रूपल को क्या दिया, देखो ये व्हील चेयर दी। नाउ शी कैन गो एनीवेयर। अगर वो चल नहीं सकती है तो इतने सारे सपोर्ट लेके चलना, इट्स सो डिफिकल्ट। सी हियर, इट्स सो डिफिकल्ट टू वॉक लाइक दिस। कितना दुखेगा उसको, हाथ भी दुखेगा, नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, सो शी कांट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। नजदीक नजदीक में ही जा सकते हैं। बट वन ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर। शी केम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग बॉय। सो उसके बाजू में ही कोई लड़का रहता है जो उसको हेल्प करता है स्कूल लेके जाने में। नाउ शी कैन गो। सी, नाउ शी इज सो हैप्पी, शी इज नाउ गोइंग स्कूल, राइट। सो हियर ऑन पेज नंबर 17 कंटिन्यू दिस स्टोरी। एवरीबॉडी वेलकम्ड हर। स्कूल में उसके टीचर्स, प्रिंसिपल सर, फ्रेंड्स, सब ने उसको बहुत वेलकम किया। हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू। पेरेंट्स भी हैप्पी है कि नहीं, मेरी बच्ची भी स्कूल जाके पढ़ेगी, बिकॉज शी ऑल्सो लाइक टू स्टडी। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी। उसके टीचर्स देखो, स्टूडेंट्स देखो, सब रूपल को स्कूल में देख के बहुत ही खुश हो गए, और रूपल भी बहुत खुश हो गई। नाउ शी कैन स्टडी। सो इन दिस पिक्चर द गर्ल रूपल, शी वॉज ईगर टू गो टू स्कूल, because she is seeing that from other children from her locality they also go to school, right? But because of polio she could not go to school. But one of the organization donated her this wheelchair, and because of that she is able to attend the school with the help of this neighboring boy. In the school everyone greeted her. Everyone has boosted her spirit because she also very eager, she was fond of studying. So उसकी स्पिरिट को बढ़ाया स्कूल के टीचर्स ने, उसके प्रिंसिपल सर ने, उसके फ्रेंड्स ने. Now Rupal is very happy with her life now. She is very happy that now she is going to study hard. So आप भी स्कूल एंजॉय करते हो ना? सी, ये इतनी हैंडीकैप होके भी इतना स्कूल में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए इतना है. हमारे पास तो सभी बॉडी ऑर्गन्स इतने सही सलामत है, तो हमें तो कितना अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, राइट? So now in next class we'll do all the question answers related to the stories, and why you like to go to school, what you do in the school, everything we'll study. You just think about why you like to go to school, what you are doing with your friends in school, which activities we do in schools, which activity do you enjoy the most. We are going to study in next class. Thank you.